So very good afternoon to all and welcome all to today's session. I'm sure my voice is audible to you all. Just type yes on the chat box. So we'll take the 30 seconds break and we'll just wait for the confirmation कि जैसे आप confirm कर देते मेरी voice audible है and screen visible है. So we'll start the session on the Nifty 50 weekly option expiry analysis. So thank you so much for the confirmation and once again welcome all to today's session that's on Nifty 50 weekly option expiry analysis. My name is Rohit and I'll be your co-host for this session. And today we're going to talk about like the Nifty 50 expiry that आज Nifty 50 का expiry कैसे लग रहा है followed by the support resistance. Now before we go into the session, let's look out the market today. The Nifty 50 opened at around 22,821 and the high was 22,914 and the low was 22,812. So currently it is trading around this 22,895. I'm having with me Mr. Karan Pai, who is a research analyst and having a vast experience into the capital market, and he'll going to give you the view on the Nifty 50, followed by the top sectors which are moving right now, which are into the green and into the red zone. So with this, I'll hand over the session to Mr. Karan Pai. Karan, all over to you now. Thank you so much for that introduction, Rohit. So before we start, एक जो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हम लोग की तरफ से होता है कि ये जो भी आप इसमें देखोगे दैट इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड इससे ये पूरे वेबिनार में हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे दैट इज नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग रिकमेंडेशन पर से. अगर आपको रिकमेंडेशंस फॉलो करने हैं तो हमारे रिसर्च टीम के रिकमेंडेशंस आप फॉलो कर सकते हो. इट इज देयर ऑन द ऐप पे आपको नोटिफिकेशन आते जाएंगे. And secondly, now we'll quickly move on to what the Nifty has been doing. So, सबसे पहले before getting into that, we'll quickly take a look at what has changed since Monday. So, Monday को मैंने दो तीन चीज़ें पॉइंट आउट की थी कि ये 22,800 से 22,700 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट है एंड इसका सिग्निफिकेंस अगर आप देखोगे तो बढ़ते जाता है बिकॉज ये एक दिन में दैट इज ऑन द 12th of Feb आप देखोगे देयर वाज अ लॉन्ग लोअर विक. 14th Feb को लॉन्ग लोअर विक था, 17th Feb को लॉन्ग लोअर विक था. एंड ब्रॉडली अगर आप देखोगे मार्केट में देयर इज अ बिट ऑफ कंसोलिडेशन 23,300 से लेके 22,700 के बीच में ब्रॉड कंसोलिडेशन है. और कितने दिन हुए? तकरीबन आज 7वां दिन है जहां पे वी हैव सीन अ बिट ऑफ कंसोलिडेशन एंड दिस कम्स आफ्टर एन 8-day स्ट्रीक ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स. मतलब अब पिछले सॉरी अब 5th Feb से अगर आप देखोगे कंसिस्टेंटली निफ्टी का परसेंटेज चेंज जो है वो नेगेटिव रहा है. उसके बाद इट हॉल्टेड एट अराउंड 17th Feb एंड तब से ब्रॉड कंसोलिडेशन में ही चल रहा है इंडेक्स. सो लास्ट टाइम अगर आपने अगर हमारा मंडे का वेबिनार आपने अटेंड किया था, मैंने 28,800 से 28,700 का जो सिग्निफिकेंस है वो आपको बोला था. सो 22,800 से 22,700 का, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट वो जोन का सिग्निफिकेंस क्या है मैंने आपको बोला था. सो दैट वाज अप्रैल 24 में ये हाइज बने थे एंड वही लेवल पर आज आकर तकरीबन वही लेवल पर निफ्टी जो है काइंड ऑफ सपोर्ट ले रहा है. सो इसके पीछे की साइकोलॉजी भी मैंने आपको बोली थी. सो जिन जिन ट्रेडर्स ने वो लेवल पर प्रोबेबली लॉन्ग्स मिस किए थे या आगे जाकर कभी एंट्री मारी थी, दे माइट बी सीइंग दिस लेवल एज अ गुड एंट्री लेवल. एंड सेकेंडली अगर आप पूछो कि मार्केट में व्हाई देयर इज कंसोलिडेशन, सो जनरली अगर आप देखोगे जब भी ग्लोबल इकोनॉमी में कंफ्यूजन है या किसी चीज को लेके अनसर्टेनिटी है, सो अभी की अगर हम लोग बात करें, सो देयर इज अ लॉट ऑफ things that are going on in the US. जब से नया प्रेसिडेंट आया है, जब से डोनाल्ड ट्रंप हैज टेकन ओवर एज प्रेसिडेंट, बहुत सारे टैरिफ्स को लेकर देयर इज अ बिट ऑफ अनसर्टेनिटी. देन अगर आप न्यूज अगर कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हो या इफ यू आर अपडेटेड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली, सो रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसके बीच में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ ट्रूस. सो ये सारी चीजें जो है वो मार्केट में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा कर रही है. अभी कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रही है? बिकॉज
टैरिफ्स के फ्रंट पे अगर आप देखोगे देयर इज नॉट मच क्लैरिटी, या रशिया यूक्रेन का जो ट्रूस है उसका वो कैसे होगा या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए उसके रिगार्डिंग कोई क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि कमोडिटी मार्केट्स में भी काफी उतार चढ़ाव हो रहा है. सो यू लुक एट समथिंग लाइक क्रूड, यू लुक एट समथिंग लाइक गोल्ड, उसमें आप वोलेटिलिटी देख सकते हो कितनी है. क्रूड एवरी न्यूज पर इट इज मूविंग हायर बिकॉज रशिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ क्रूड. सो वहां पर अगर ये ट्रूस हुआ तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, या फिर अगर ये ट्रूस नहीं हुआ देयर माइट बी सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल, फर्दर सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल. ऐसे सब स्पेकुलेशन चल रहा है मार्केट में, एंड दैट इज व्हाई यू सी वोलेटिलिटी इन द कमोडिटीज मार्केट इन द इवनिंग सेशन. गोल्ड, जैसे सबको पता है, गोल्ड डॉलर ये जो है वो सेफ हेवन एसेट्स है. सो जब भी इकोनॉमी में थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है, रिटर्न्स को लेकर जब थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है, इनवेरिएबली पैसा जो है वो सेफ हेवन एसेट्स में जाता है. सो दैट इज व्हाई यू सी गोल्ड गोइंग हायर, दैट इज व्हाई डॉलर बॉन्ड्स में जो है वो पैसे जा रहे हैं. नाउ फेड के मिनट्स भी हुए थे एंड दे वर नॉट much of a surprise. It was broadly in line with what the general expectations was, या जो last policy meeting में बोला था वहीं पर था, वो वही repeat हुआ है. So, but the news was taken as a bit positive by the US markets, and अगर आप देखोगे S&P 500 ने for a second day in line नया हाई मारा है, एंड नैस्डैक भी अगर आप देखोगे तो एक अपवर्ड मूव रहा है. आई वुड नॉट से इट्स अ स्ट्रॉन्ग रैली, बट डेफिनेटली देयर हैज बीन अ मूव, अपवर्ड मूव. एंड इसमें भी अगर आप देखोगे दो सेशंस कंसिस्टेंटली नया हाई मारा है. दो लास्ट सेशन में इट वाज नॉट अ क्लोज एट अ न्यू हाई, बट इट वाज वेरी क्लोज टू द न्यू हाई. सो क्लोज जब मैं बोलूं कि मार्केट बंद नए हाई पर नहीं हुआ है, बट अगर आप क्लोज देखोगे उसका तो नए हाई के आसपास ही रहा है. So this is what has been happening in the global market. Gold अगर आप देखोगे, we seem to be inching closer to the $3,000 mark. Still we are $50 away from the $3,000 mark, but nonetheless एक जो demand for safe haven assets है वो कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है. एंड जब जब ऐसा होता है कि whenever there is a demand for safe haven, आपके emerging market से पैसा निकलकर ऐसे safe haven assets में जाता है. So that is why you see जब भी uncertainty रही है, asset classes like gold या US bonds they rally. So at the moment भी ऐसे ही kind of scenario हो रहा है, not exactly same, not exactly what जो आप बोलो कि जो एक textbook वो follow नहीं कर रहा है, but something similar is happening. निफ्टी में कंसोलिडेशन कंफ्यूजन की वजह से हो रहा है. सो टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो अगर आप पिछले कई सेशंस में देखोगे, वी हैव सीन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस अराउंड 23,000 से लेकर 23,100 23,300 तक. सो प्राइस एक्शन हमें ये बोलता है कि जैसे हम यहाँ पर 22,800 पर लोअर विक देख रहे हैं, 23,300 के आसपास अपर विक है. अपर विक ये बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट देन देयर वाज अ सेल ऑफ एंड इट एंडेड ऑन अ नेगेटिव नोट, और इट एंडेड क्लोजर टू द ओपन. मतलब बेसिकली जो भी अपमूव था वो एग्जॉस्ट हुआ है. मतलब द बायर्स आर नो लॉन्गर कॉन्फिडेंट टू गो लॉन्ग अबाउट दैट लेवल. Correct. So the down move could probably be because of the sell off या मतलब position square off by the buyers, or probably fresh sellers entering into the market. But what we look at is the tail. यहाँ पर आप upper wick देख सकते हो, यहाँ पर आप upper wick देख सकते हो. जैसे ही 23,000 लेवल पार हो रहा है, या तो फिर there is a sell off, मतलब there is not enough confidence कि हम लोग 23,000 के ऊपर या 23,100 के ऊपर decisively close कर सके. So when we compare to what has happened since we did the webinar on Monday, nothing much has changed, and resistance continues to be around 23,100, 23,200 उसके ऊपर जाएगा तो 23,300 becomes a 23,300, 23,500 becomes a very crucial level. Above that, the doors towards 23,800, 24,000 open. But at this point, यहाँ से 23,000, 23,800, 24,000 looks very far-fetched. So immediate resistances अगर मुझे देखने हैं, that is going to be 23,000 to 23,100. Next मेरा जो level आएगा, that would be around 23,300. On the downside, price action clearly ये बता रहा है कि there is a lot of buying interest around 22,700, 22,800 zone में. So going by what the charts are telling us, going by what the psychology of the market is telling us, on the downside 22,700, 22,800 is going to act as a support, and on the upside 23,300, 23,100 to 23,000 immediately, and उसके ऊपर 23,300 is going to act as a resistance. So now we have looked at the charts. हम लोग को एक levels पता है. What I'll do is I'll just add a few exponential moving averages just to see
how the market is positioned with regards to their moving averages. सो अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की बात करूं तो हम लोगों ने ये कवर किया हुआ है कि व्हाई अ पर्टिकुलर मूविंग एवरेज, व्हाई अ पर्टिकुलर पीरियोडिसिटी का मूविंग एवरेज इज इंपॉर्टेंट. एंड मैं ये स्पेसिफिकली 5, 13 एंड 21 क्यों यूज करता हूं. नाउ दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन रिपीटिंग मल्टीपल टाइम्स. सो बेसिकली आई एम लुकिंग एट अ वीक, हाफ अ मंथ का जो ड्यूरेशन है वो, एंड एक महीने का जो ड्यूरेशन है वो. सो जब भी हम लोग एक महीना बोलते हैं, सो नॉर्मली लोगों को लगता है कि इट शुड बी क्लोजर टू 30 days, बट देन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इट कम्स टू अराउंड 22. सो यू कैन राउंड इट ऑफ टू 20 नॉर्मली, बट देन अगेन दीज आर ऑल्सो फिबोनाची नंबर्स, सो वो मेरे लिए थोड़े ज्यादा मायने रखते हैं. सो 5, 13 and 21 it is, and I'll just plot the colors as well, so आपको पहचानने में थोड़ी प्रॉब्लम कम होगी. या सो अगर हम लोग ईएमए वाइज देखेंगे तो तीनों जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, जो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो 5 becomes my short, 13 becomes my medium term and 21 becomes my fairly long term moving average. सो एट द मोमेंट जो है हम लोग तीनों क्रूशल मूविंग एवरेज, तो तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे हैं. एंड अगर आप जस्ट बाय लुकिंग एट द चार्ट्स अगर आप देखोगे तो पिछले 6-7 सेशंस में the 5 period exponential moving average is acting as a bit of resistance. So थोड़ा वो उसको breach करता है, but then the close जो है index का, it is not able to go above the 5 period exponential moving average. If it manages to go 23,100 जो है, that also falls around the 13-day EMA, and 23,200 जो है, that comes around the 21-day EMA. So now we know that we have cluster of resistances somewhere in between 23,100, 23,300. So ये जो zone रहेगा हमारा, ये थोड़ा crucial होगा. Now we'll quickly take a look at what the OI data is telling us. So NSE India के website पर जाकर we'll just type in NIFTY and go to option chain. सो जब मैं ऑप्शन चेन में क्लिक कर रहा हूँ, इट इज शोइंग मी द 20th Feb एक्सपायरी, मतलब आज की जो एक्सपायरी है वो. सबसे पहले हम लोग आज की एक्सपायरी देखेंगे एंड देन देखेंगे कि नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेडर्स का एक्सपेक्टेशन क्या है. सो कॉल साइड में अगर मैं देखूं, ओटीएम फ्रंट पर ऑब्वियसली 22,900, 22,950 पर आपको एक्यूमुलेशन थोड़ा ज्यादा रहेगा. बट देन इफ यू जस्ट डिग अ बिट डीपर, सो 23,000 के आसपास जो है वो तकरीबन 2,52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है. And then if we go further, then 23,050, 23,100 and 23,300 पर जो है वहां पर भी OI accumulation काफी ज्यादा है. So जो levels हम लोग को चार्ट पर दिख रहे थे, which was basically a cluster of horizontal resistances and a few moving averages, the market is also probably looking at that. So वो levels पर जैसे ही आता है market, we'll have to see how it reacts. Are the bulls that confident कि वो break करके ऊपर जाए, और जो बुल्स हैं वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, बेयर्स जो है वो पोजीशन में एंटर करेंगे, एंड वी माइट सी द लेवल ऑफ 23,000 नॉट बीइंग ब्रीच्ड अगेन. एंड पुट साइड में अगर हम लोग देखें तो ओटीएम फ्रंट पर अगर हम लोग देखेंगे 22,800 पर थोड़ा रेजिस्ट ओआई बिल्डअप है, 22,700, 22,600. सो बेसिकली और जितने भी राउंड फिगर्स है सब में देयर इज अ बिट ऑफ राइटिंग, बट हाईएस्ट अगर आप देखोगे इज देयर ऑन 22,800 and 22,700. Now this is for today's expiry, and अगर मैं next expiry देखूं, that is 27th Feb की expiry, which also happens to be the monthly expiry. उसमें अगर आप देखोगे तो 23,000 पर 93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का OI बिल्डअप है, एंड फॉलोड बाय 23,100, 23,200. So broadly, at least till for this expiry, the traders are not expecting कि 23,300 का level टूटेगा. So अब scenario कैसे बनता है? So we'll also take a look at what the supports, what the data is showing with regards to support. So 22,800 पर of course there is a bit of काफी OI accumulation है, and 22,700 पर. सो जो लेवल्स हम लोग अभी देख रहे थे, जो लेवल्स हम लोगों ने मंडे को देखे थे, वही लेवल्स वापस रिपीट हो रहे हैं. सो प्रोबेबली ब्रॉडली अगर आप देखोगे तो ट्रेडर्स आर एक्सपेक्टिंग कि रेंज जो होगा 23,300 से लेके 22,700 तक का होगा. So we might be able to see major moves in either direction once either 23,300 is taken out or 22,700 is taken out.
नाउ गोइंग बाय द प्राइस एक्शन, जैसे मैंने आपको बोला कि दोनों जगह पे में मार्केट मेकर्स जो है, पार्टिसिपेंट्स जो है वो काफी एक्टिव है. सो वन थिंग दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इज नॉट गेटिंग ट्रैप्ड मतलब हो सकता है कि फॉर अ ब्रीफ मोमेंट इट गोज अबाउट 23,100 एंड देन वहां से वो वापस नीचे आ जाए, या 23,300 कहीं ना कहीं ब्रेक होते हुए दिखाई दे. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द मंथली एक्सपायरी 27 फेब तक 23,300 आपको ब्रेक होते हुए दिखाई दे, बट देन इट अगेन रिवर्ट्स बैक. सेम थिंग नीचे की तरफ में भी आप देखोगे, हो सकता है कि 22,700 को ब्रीफ मोमेंट के लिए ब्रेक करे एंड देन इट रिवर्ट्स बैक अप, मतलब वो सपोर्ट लेवल जो है ब्रेक करके वापस ऊपर जाए. सो दीज आर बेसिकली ट्रैप्स. सो वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि जब भी आप ऐसे मार्केट में या ऐसे सिचुएशंस में आप जब भी ट्रेड लेते हो, मेक श्योर यू हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एंड स्पेशली इफ यू आर डिप्लॉइंग सम स्ट्रेटजीज लाइक से शॉर्ट स्ट्रैंगल. सो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, बिकॉज आपको जैसे पता होगा कि स्ट्रैंगल जब आप सेल करते हो, द प्रॉफिट इज लिमिटेड टू द प्रीमियम दैट यू हैव रिसीव्ड, बट आपके जो लॉसेस है दे कैन रन वेरी डीप, इट कैन बेसिकली बी अनलिमिटेड, बिकॉज आप दोनों साइड के ऑप्शंस शॉर्ट कर रहे हो. सो those are things that you need to keep in mind, and now we'll quickly take a look at what the individual sectors are doing. Now हम ये जो sector list है, this is basically the 12 sectors that we think could move the market, and इसमें अगर आप देखोगे 12 सेक्टर्स में से 6 जो है वो पॉजिटिव है, 6 नेगेटिव है, मतलब कहीं ना कहीं ब्रेथ जो है वो बैलेंस्ड है. बैलेंस्ड एज इन इट्स नॉट लॉपसाइडेड कि हम मेरे गेनर्स ज्यादा है या मेरे डिक्लाइनर्स ज्यादा है, बट इट्स बेसिकली बैलेंस्ड. 6 गेनर्स है, 6 डिक्लाइनर्स है. टॉप परफॉर्मर्स में अगर आप देखोगे, वी हैव मेटल्स, पीएसयू बैंक्स, एनर्जी, ऑटो, एंड जो काफी आज के सेशन में जो थोड़े नेगेटिव बायस पर ट्रेड कर रहे, दैट इज बेसिकली निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक्स, बैंक निफ्टी. सो लेंडर पैक जो है, दे सीम टू बी लूजिंग टुडे, सो अदर देन द पीएसयू बैंक्स. सो प्राइवेट बैंक्स आप देखो, फाइनेंशियल सर्विसेज आप देखो, बैंक निफ्टी इन जनरल आप देखो, सो लेंडर्स जो है वो थोड़े बीटिंग ले रहे हैं. पीएसयू बैंक्स आर ऑन द गेनर साइड. Now we'll quickly look at what the individual stocks are doing in all these sectors. So यहाँ पर जाकर I select Nifty 50 and Nifty 50 में अगर आप देखोगे, again मेरा breadth जो है it's a bit tilted towards the advances. Now another thing that I would like to point out is कि आज के सेशन में आप देखोगे Nifty opened on a negative note. मतलब कल का क्लोज आप देखिए, इट वाज 22,932 एंड आज का ओपन देखिए 22,821. नाउ दिस वाज बेसिकली आफ्टर द मार्केट फॉलोड गिफ्ट निफ्टी क्यूज थोड़ा एक नेगेटिव ओपन ही बता रहा था, बट देन आप बाद में देखिए कि एक थोड़ा 22,812 का लो मार्क है, इंडेक्स ने रिकवरी दी है, एंड दिस रिकवरी हैज बेसिकली पुश द ब्रेथ या जो एडवांस डिक्लाइन है, दैट दे हैव पुश्ड इट, आई मीन द पार्टिसिपेंट्स हैव पुश्ड इट slightly towards the bulls because ये इंडेक्स में आपने रिकवरी देखी. सो 29 स्टॉक्स जो हैं अभी एडवांसिंग फेज में है एंड 21 आर डिक्लाइनिंग. एंड टॉप 5 स्टॉक्स अगर हम लोग देखें, वी हैव समथिंग लाइक एनटीपीसी, श्रीराम फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स, एमएनएम एंड हिंडाल्को, जो 2% से ज्यादा, मतलब 2% से ज्यादा के परसेंटेज चेंज पर ये पॉइंट पर ट्रेड कर रहे हैं. एंड वहीं पर अगर आप देखोगे डिक्लाइनर्स, ऑब्वियसली जैसे हमने देखा था कि लेंडर्स जो है वो थोड़े बैकफुट पर है आज. सो एचडीएफसी बैंक इज द हाईएस्ट लूजर, 2.4% डाउन है, फॉलोड बाय मारुति, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, आईटीसी एंड आईसीआईसीआई बैंक. सो लेंडर्स जितने भी हैं वो थोड़े नेगेटिव इसमें है. सो यू हैव समथिंग लाइक कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ऑल ऑन द बिट ऑफ अ लूजिंग साइड. नाउ इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करें तो हमने सेक्टर्स में देखा था कि मेटल्स जो हैं दे वर रैलिंग. सो विल क्विकली टेक अ लुक एट व्हाट आर द मेटल स्टॉक्स दैट आर रैलिंग एट दिस पॉइंट. सो मेटल्स में अगर आप देखोगे तो सारे के सारे 15 स्टॉक्स जो मेटल इंडेक्स में है, दे आर ट्रेडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट. Now you have something like APL, Apollo, Wellcorp, NMDC, National Aluminium, all trading on a positive note. नेगेटिव में अगर आप देखोगे तो हमने देखा था कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है आज. एंड इसमें अगर आप देखोगे द ब्रेथ इज अगेन अ बिट ऑन द बुलिश साइड. नाउ व्हाई ऑन द बुलिश साइड? बिकॉज जैसे हमने देखा था कि मार्केट ओपन ऑन अ नेगेटिव नोट, वहां से थोड़ी रिकवरी आई है. सो वो रिकवरी को सारी इंडस्ट्रीज फॉलो कर रहे हैं. एंड ब्रेथ जो है फाइनेंशियल सर्विसेज में 11 स्टॉक्स एडवांसिंग फेज में है, 9 डिक्लाइन में है. सो श्रीराम फाइनेंस, आरईसी लिमिटेड, एचडीएफसी, एएमसी, पीएफसी, एमसीएक्स, ये थोड़े लीडिंग में है, 1% से ज्यादा का गेन है. एंड अगर आप लूजर्स देखोगे
या यू हैव HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, बेसिकली प्राइवेट बैंक्स जितने भी हैं. देन यू हैव SBI कार्ड्स, Bajaj Finance, Bajaj Finserv, which are trading with a loss of more than 0.5%. सो समथिंग जो प्राइवेट बैंक्स है जैसे कोटक बैंक हुआ, ICICI बैंक हुआ, HDFC बैंक हुआ, ये जो है वो 1% के ज्यादा से लॉसेस पर चल रहा है. सो दिस वाज बेसिकली अबाउट द मार्केट. एंड अगर RSI की मैं बात करूं, जैसे लास्ट वेबिनार में मैंने आपको बोला था कि RSI में रेंज शिफ्ट जो है वो कैसे प्ले कर रहा है ये पॉइंट पर. And because the market is in a bit of a downward phase, the RSI is currently actually moving between 60 and 30. So whereas जब एक जो पहला फेज था उसमें it was moving between 80 and 40. So कहीं ना कहीं RSI को 60 के ऊपर जाने में थोड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. And then we are trading on a bit of a negative, trading with a bit of a negative bias. We'll quickly take a look at the bank Nifty charts also. सो बैंक निफ्टी की भी अगर हम लोग बात करें तो RSI एट द मोमेंट इट इज स्टिल बिलो द 50 लेवल. 50 जो है वो सेंटर लाइन माना जाता है RSI का. वो लेवल के नीचे ही RSI अभी भी ट्रेड कर रहा है. बट चार्ट वाइज अगर आप देखो, अगेन देयर इज अ बिट ऑफ कंसोलिडेशन, बट इसमें कंसोलिडेशन का स्पैन जो है वो थोड़ा लंबा है. नाउ वी हैव बीन कंसोलिडेटिंग फॉर 7 days. एंड ब्रॉडर रेंज आप देखोगे जो टेक्निकली दिख रहा है दैट इज 49,848 है, बट आई वुड लाइक टू राउंड इट ऑफ टू 49,900. एंड नीचे में 48,500 के आसपास जो है सपोर्ट आते हुए दिख रहा है. मतलब बेस्ड ऑन व्हाट द कैंडल्स आर टेलिंग, मतलब यहाँ पर भी लोअर विक बन रहा है अराउंड दैट 48,700 48,800 जोन. So we'll also take a look at what the Bank Nifty OI data is telling. Now Bank Nifty obviously is going to be, we will be looking at the monthly expiry. So Bank Nifty type करके we go to option chain. Option chain में अगर आप देखोगे, if you keep scrolling down, we'll look at build up. So call side में पहले देखते हैं. Sorry, this is Nifty. Bank Nifty. So meanwhile, Karan opens the Bank Nifty OI data. If you have any queries, anything, then you can put in the chat box. So जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं YouTube चैनल से, you can see that there is a live chat section. वहाँ पे live chat section पे you have to just type your query there. In case you have not liked and subscribed the channel, so do like and subscribe so that you can get and click on the bell icon also, so that you can get the notification also that whenever we are doing such a valuable webinar. Yeah, Karan, all over to you. Yeah. सो बैंक निफ्टी में जैसे हम लोग मंथली एक्सपायरी में देख पा रहे हैं कि 49,500 के पास जो है ओआई डेटा सबसे ओपन इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन सबसे ज्यादा है. एंड आफ्टर दैट 50,000. नाउ 50,000 एट दिस पॉइंट इज वेरी फार फेच्ड, बट 50,000 बीइंग अ राउंड फिगर, बीइंग अ साइकोलॉजिकल फिगर, वो जो है वो थोड़ा सिग्निफिकेंस प्ले करता है. सो 50,000 फॉलोड बाय 49,500, एंड देन उसके बीच में वी डू हैव अ बिट ऑफ राइटिंग, बट देन अगेन मेजर लेवल्स मुझे देखना है. देन 49,500 होगा. once the banking index goes above 49,500, we'll start looking for further levels. नीचे की तरफ मैं अगर देखूं तो somewhere around 49,000 and 48,500 that seems to be important. So जैसे हमने यहाँ पर देखा था 48,500 48,600 के आसपास जो है थोड़ा सपोर्ट है, एंड 49,800 के आसपास जो है वो रेजिस्टेंस बता रहे हैं यहाँ पर बेस्ड ऑन द चार्ट्स. So what we'll do is we'll pause for a second, or we'll pause for a minute, and we will wait for any sort of, अगर आपने कुछ एनालिसिस किया है जो आपको डिस्कस करना है, then we'll open up the floor for that. या हमारे जो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे है, हम जो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे पब्लिश कर रहे हैं उसमें अगर आपको कुछ क्वेरी है तो वो भी आप डाल सकते हो. सो विद रिगार्ड्स टू मार्केट्स, या ये रिएक्शन क्यों है या ये मूवमेंट क्यों है, why there is consolidation, we have explained majority of it. So Karan, earlier like we were having the query that is RSI का जो level होता है 30-70 होता है. So as a theory, like it is mentioned that 30-70, but we have seen like the people say like in a influencer video also that 40-50 पकड़ना चाहिए. So what is the best way like to look at the RSI plus stochastics? सो RSI के बारे में तो सबसे पहले रोहित आपको एक समझना है कि RSI जो है वो ऑसिलेटर है. ऑसिलेटर मतलब इट कैन मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स. वो 100 के ऊपर नहीं जाएगा, 0 के नीचे नहीं जाएगा. सो टेक्स्ट बुक्स आपको ये बताते हैं कि 70 and 30 इज लाइक द आइडियल लेवल.
सो आइडियल लेवल नाउ दिस माइट बी कि किसी के लिए वो चल जाए, किसी के लिए वो चल गया हो, बट देन वही टेक्स्ट बुक आपको ये भी बताएंगे कि एक आरएसआई जो है अगर जब भी मार्केट नीचे गिरता रहता है, ओवरसोल्ड का ओवरसोल्ड ही रहेगा एंड ओवरबॉट इन केस ऑफ अ बुल मार्केट, ओवरबॉट का ओवरबॉट ही रहेगा. नाउ आई कैन शो दिस टू यू विद एन एग्जांपल. अगर मैं निफ्टी में ही जाता हूँ, या ये फेज देखिए, दिस इज बेसिकली ये नवंबर 2023 का है. सो बेसिकली 24 नवंबर से इट वाज इन एन ओवरबॉट जोन. ओवरबॉट जोन में इसे क्यों बोलता हूँ, बिकॉज ये 70 के ऊपर चला गया था. सो वन माइट इवन अज्यूम कि मैं अगर 80-20 भी लूं तो भी ये काफी ओवरबॉट था, बिकॉज इट वेंट वेरी क्लोज टू 90 लेवल एंड इट स्टेड देयर फॉर अ व्हाइल. व्हाई डिड इट स्टे देयर फॉर अ व्हाइल? बिकॉज जो थियरी आपको बोलती है कि आरएसआई माइट रिमेन ओवरबॉट फॉर अ लॉन्गर व्हाइल इन केस ऑफ अ बुल मार्केट, दिस इज एन एग्जांपल. सो जैसे हम लोग बोलते हैं कि भले ही आपको डॉक्टर बोले कि कार्बोहाइड्रेट्स आपके लिए खराब है, बट देन कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो मेक अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ योर मील. सो आपको सबसे पहले समझना है कि आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या है. सेम थिंग विथ एनालाइजिंग द मार्केट्स आल्सो. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या कौन सा इंडिकेटर, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आपके लिए कौन सा इंडिकेटर सबसे बेस्ट चलता है. बिकॉज द मोर यू नो अबाउट एन इंडिकेटर, द मोर कंफर्टेबल यू विल गेट यूजिंग दैट पर्टिकुलर इंडिकेटर. सो वंस यू हैव डिटरमाइंड कि आरएसआई आपके लिए सबसे बेस्ट चलता है, जो आरएसआई का मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको पता है, सो देन यू विल अंडरस्टैंड कि आरएसआई एक पर्टिकुलर लेवल पर है तो वो क्यों है, एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है. सो ऐसे टाइम पर आपको समझना है कि देन यू कैन रन अ बैक टेस्ट कि भाई मेरा आरएसआई का अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया है. सो निफ्टी पे मैं एनालाइज करता हूँ कि जब भी 70 पे गया तो मैं शॉर्ट करता हूँ, 30 पे गया तो मैं बाई करता हूँ. अगेन दिस इज नॉट अ सिस्टम, आई एम जस्ट गिविंग यू अ एग्जांपल कि अगर ये मेथोडोलॉजी से आप चलोगे तो यू माइट एंड अप इन अ प्रॉब्लम. बिकॉज आप बैक टेस्टेड रिजल्ट्स देखोगे, जैसे ये सिचुएशन में है, अगर आपने ये पॉइंट पर शॉर्ट किया है, लेट्स अज्यूम कि द मार्केट वाज एट से 20,000, वहां पर आपने शॉर्ट किया है तो वहां से वन साइड रैली रही है. नाउ आई अंडरस्टैंड कि आप लोग स्टॉप लॉसेस रखेंगे, बट देन इफ यू वर टू बिल्ड अ सिस्टम जस्ट अराउंड आरएसआई, यू वुड हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन दिस रैली. So that is exactly what I'm telling you, trying to tell you. And see, यहाँ पर एक और फिनोमिना है कि despite RSI coming down, आपके prices consolidation में गए. So ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है कि just because my RSI is coming down मतलब मेरा underlying जो है वो भी नीचे आएगा. Underlying मैं इसलिए बोल रहा हूँ because यहाँ पर आप probably gold भी लगा सकते हो या S&P भी लगा सकते हो. सो इसे मैं अंडरलाइन बोलता हूँ. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दिस इज नॉट अंडरलाइन. अंडरलाइन इज जब आप डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हो तभी. यहाँ पर एनी इंस्ट्रूमेंट दैट यू आर एनालाइजिंग, दैट वुड बी द राइट टर्म. सो वो आपको समझना है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हाउ दी आरएसआई माइट रिएक्ट. आरएसआई कमिंग डाउन माइट बी बेसिकली अ लॉस ऑफ मोमेंटम. इट कुड ऑल्सो बी एन इंक्रीज इन बेरिश मोमेंटम, ऐसे भी हो सकता है. बट you have to interpret it based on what the market is doing and how well you understand the particular indicator. सो जब भी मैं ये 5, 13, 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यूज करता हूँ, आई नो द लॉजिक एज टू व्हाई आई एम यूजिंग इट. मुझे इसके पिटफॉल्स भी पता है, मुझे इसके बेनिफिट्स भी पता है, मुझे इसके ये भी पता होना चाहिए कि मैं कब इसे ट्रेड नहीं करूंगा. अभी फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेजेस का बेसिक अगर आप देखोगे, इट इज बेसिकली फॉलोइंग द प्राइसेस. अगर आपका प्राइसेस साइडवेज जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर मूविंग एवरेज सिस्टम वर्किंग? So it could be a situation like this जहाँ पे आपको in out signals आ रहे हैं and then you are not making any money. So whenever you are developing a system, whenever you are following a particular indicator, know the benefits of that particular indicator, know the pitfalls of that indicator, know when that indicator is bound to fail, know when it is bound to succeed. That's a great valuable information on the RSI plus stochastic, that why one need to follow it, and plus what is the pitfall of this indicator. So we'll open the floor for a Q&A for a 30 seconds or so, and if you have any queries, you can put in the chat box. So our research analyst is here, like to solve your doubts. Also, we have run the poll on this कि Nifty 50 का आज view क्या लग रहा है. So majorly like the 67% said that it will be in the sideways. So let's look in the market today, like how the data is coming and how the European markets will get open and क्या stats रहता है.
So with this, we'll like to end our session here, and thank you to all the participants for joining us today's session on the Nifty 50 weekly options expiry analysis. And thank you, Karan, for giving such a great insight on the today's expiry, followed by the major support and resistance. And thank you, everyone, for attending today's session.